Hello everyone, good morning. I hope you all are well. Now, once again, I am here with the same chapter but a different topic. In our previous lecture video, I have explained you about the work, unit of work, when the work is conditions, when work is called positive work, when it is called negative work, when it is zero. All that conditions we have discussed in our last class. Today I am here with a new topic, a new concept, that is energy. What? Energy. Okay, beta. Now, what is energy? So, in simple language, energy is capacity of doing work, or we can say that capacity of a body to do work or tendency of a body to do work is called energy. Okay, beta, this is what? Energy. We can say that one more thing, energy equals to work done, means energy consumed or energy utilized is equal to the amount of work done. Whenever there is energy is consumed or wasted or utilized, that amount of energy will be transformed in what? Work done. Is it clear? So, in simple way, energy means capacity to do work or ability of a body to do work is called energy. So, what is the unit of energy? Unit of energy. So, as energy is same, that is energy is equal to work done. In this, according to this concept, the unit of energy is the same that of the unit of energy is same that is of work done, means joule. What? The unit of energy is joule. जो वर्क डन की यूनिट होगी बेटा, वही यूनिट किसकी हो जाएगी? एनर्जी की भी होगी. क्यों? बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. इक्वल है, सेम है. एनर्जी जितना वेस्ट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? वर्क डन में होगा. या फिर वर्क डन जितना होगा तो मतलब उसने उतना एनर्जी कंज्यूम किया है, तभी वर्क डन हुआ है. ठीक है बेटा, तो एनर्जी का यूनिट सेम होगा जो वर्क डन का होगा. ठीक है बेटा, अगर हम बिगर यूनिट की बात करें, ये हो गया हमारा एसआई यूनिट. एसआई यूनिट, बिगर यूनिट, बिगर यूनिट of energy, that is equal to kilojoule. What? Kilojoule or megajoule. ठीक, 1 kilojoule is equal to 10 to the power 3 joule. Is it clear? 10 to the power 3 joule. Is it clear? Now other bigger unit is megajoule, is also the unit, bigger unit of work energy, and that is megajoule is equal to 10 to the power 6 joule. That is 1 megajoule is equal to 10 to the power 6 joule. So these are the some units. Means SI unit of energy is joule, and its bigger unit are kilojoule and megajoule. अदर यूनिट्स ऑफ इन सीजीएस ध्यान दीजिएगा. एसआई यूनिट तो हमने देख लिया, जूल. सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज ना सीजीएस एनर्जी, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ज. व्हाट? अर्ज. So 1 joule is equal to
10 to the power 7 अर्ज। इज इट क्लियर? 1 जूल को जब हम अर्ज में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 जूल विल बी इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ज। ओके बेटा, नाउ दिस इज द units of energy. This is unit of energy. Now one more, heat energy is measured in calorie. ध्यान दीजिएगा, heat energy. So heat energy का यूनिट क्या होता है? कैलोरी। क्या होता है बेटा? कैलोरी। ठीक, और किलो कैलोरी। कैलोरी स्मॉल यूनिट है और किलो कैलोरी जो है वो बिगर यूनिट है। किसका? हीट एनर्जी का। सो 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.8 joule. 1 calorie is equal to 4.18 joule and 1 kilojoule is equal to 4180. 1 kilojoule will be equals to 4180 calorie. ये हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी का यूनिट क्या होता है? कैलोरी होता है। ठीक, और कैलोरी 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। और जब इसी कैलोरी को हम बिगर यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, किलो कैलोरी में एक्सप्रेस करते हैं, तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4180 जूल इज इक्वल टू 4180 joule. Now the next, that is electron volt is also a unit of energy, and that is electrical energy is measured in electron volt. What? The unit of energy in atomic physics or is electron volt. Atoms की जब एनर्जी की बात आती है तो that is expressed in electron volt, and 1 electron volt is equal to how much? That is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, means equal to the charge of an electron. Okay beta, so this will be the electron volt. एटॉमिक फिजिक्स में एनर्जी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एंड द अदर यूनिट इज किलोवाट आवर, दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ electrical energy. Kilowatt hour is commercial unit of electrical energy. Is it clear? And 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 के power 6 joule. Is it clear? So this will be the, ये means अब हमने ये सब चीज़ें आपको क्यों बताई कि while solving the problems of energy, work and energy, whenever there is the problem based on numerical values and the units of energy is given different units, so that can be easily converted into SI unit, that is in joule. So for that, make your conversion simple. We will learn this all the types of units. Is it clear? Now next we will move forward further with the types of energy. Energy पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे? Types of energy, forms of energy. Okay, forms of energy. So there are different forms of energy. In that, first one is mechanical energy. Clearly listen. Mechanical energy
Okay, second one is chemical energy. Chemical energy. Third one is sound energy. Sound energy. Fourth one is nuclear energy. Nuclear energy. Fifth one is magnetic energy. Magnetic energy. Next one is heat energy. And light energy. Then next, electrical energy. Electrical energy. And the last one is solar energy. There are few more types of energy, means the tidal energy, wind energy, geothermal energy. These are also some types of energy. So now what is energy? One by one we will discuss these all types of energy. So first of all we will discuss mechanical energy. What is mechanical energy? So mechanical energy means the energy that is possessed by a body due to its position or its configuration. Due to position or configuration, or we can say that motion of a body is called, जिसको हम स्टेट बोलते हैं, ठीक, इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. इज इट क्लियर? पोजीशन उसकी, उसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. स्टेट मीन्स वेदर द बॉडी इज इन मोशन और रेस्ट. सो दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. एंड मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स. Mechanical energy, it is of two types. The one is kinetic energy. Clear? Other one is potential energy. Potential energy. Is it clear? Kinetic energy due to motion. Due to motion of a body or an object is called kinetic energy. And potential energy due to position and shape of a body. बॉडी के शेप की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, या फिर उसकी पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. और बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. एंड वन मोर थिंग, मैकेनिकल एनर्जी. Total mechanical energy of a body is equal to sum of kinetic energy, sum of kinetic energy plus potential energy, plus potential energy. This is called mechanical energy. Heat energy means energy possessed by the hot body. Body गर्म है, उसके वजह से जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड heat energy. Chemical energy means the energy possessed by the fuels such as coal, petroleum, wood, diesel, whatever. When they react, the chemical burn and it produce energy, that is chemical energy. Sound energy due to the vibration of body. Due to vibration of body that cause sensation of hearing in our ear. जिसकी वजह से हमको सुनाई दे, सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करे, दैट इज साउंड एनर्जी. लाइट एनर्जी मीन्स द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस, दैट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी. एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स द एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है बेटा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. न्यूक्लियस रिएक्शन, जब किसी एटम का न्यूक्लियस ब्रेक करे, स्प्लिट करे, या फिर कोई लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक बिग न्यूक्लियाई बनाए, तो इसके वजह से जो एनर्जी है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी. एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन.
In fusion, a single nuclei splits into two lighter nuclei, and in fusion, two nuclei fuse together to form a macronuclei, a big nuclei. And both the cases, energy is released, and that is called nuclear energy. Solar energy means the energy of the sun, and magnetic energy means the energy that is around the magnet or the poles of the magnet that attracts the magnetic substances towards it. So these are the different forms of energy that we have discussed today. Now go through the taught portion, revise it. If you have any doubt, make me know it. I will solve you in the next lecture. Thank you. Have a nice day.